interest. Pakistan welcomes Canadian investment in priority sectors including education, energy, mining and critical minerals, agriculture, infrastructure, and information technology. In this context, with regard to the agriculture sector today, we will be signing a new protocol establishing predictable phytosanitary import conditions for Canadian canola, and it will be signed in the Prime Minister office, and Honorable Prime Minister of Pakistan will witness it. We both would sign that later. We agreed for Pakistan's National Agri-Trade and Food Safety Authority and Environment Protection Agency and the Canadian Food Inspection Agency to explore opportunities for technical cooperation and capacity building in the future. We also discussed the importance of advancing the Foreign Investment Promotion and Protection Agreement. We noted the progress achieved in the recent rounds of negotiations between the two countries, and we welcomed continued engagement towards an early and mutually beneficial conclusion of this agreement. We discussed the important role of investment facilitation in providing a facilitative framework for investors and invited Canadian and companies to explore emerging opportunities in Pakistan. Our discussions also covered cooperation in the areas of education, labor mobility, consular matters, science and technology, climate change, and people-to-people exchanges. We expressed our shared interest in further strengthening these areas of cooperation. We also exchanged views on regional and international developments, including the situation in Afghanistan and counter-terrorism cooperation. I did raise the issue of Jammu and Kashmir dispute, which remains one of the long outstanding unresolved international dispute and has been on the UN Security Council agenda since 1948. India has added a new dynamic into an already volatile security situation by announcing to hold the Indus Water Treaty in abeyance. We seek the support of our friendly countries, including Canada, towards India's immediate restoration of the Indus Water Treaty, ending the weaponization of water and upholding international law and treaty obligation as per the international law and practices. We would be issuing a joint statement outlining the shared priorities and outcomes of our discussions today, which would reflect our common resolve to further strengthen Pakistan-Canada relations and enhance cooperation across various areas of mutual interest. This joint statement will be later uploaded on Ministry of Foreign Office website so that you can access directly. Pakistan appreciates Canada's constructive engagement and looks forward to further deepening our bilateral relationship based on mutual respect, shared interests, and common desire to promote peace, stability, and prosperity. My sincere thanks to my great friend, Foreign Minister Anita Anand, for her visit at my invitation, and look forward to continued cooperation between our two countries. Thank you. Over to you, Excellency. Thank you so much. Assalamu alaikum. Let me begin by thanking Deputy Prime Minister Dar for the warm welcome here in Pakistan. It has been 20 years, approximately 20 years, since a Canadian foreign minister has come to Pakistan. And so today is an important day for the continued increased bilateral relationship between our two countries. Our two countries have shared 80 years of diplomatic relations, and so there is continued work to do, of course, to deepen our ties in the area of economic relationships, trade, and investment, and I'll speak more about that in a moment. I'd like to begin by taking a step back and mentioning that Canada is pursuing a trade diversification strategy, and we will double non-US trade over the next 10 years. The importance of this trade diversification strategy has seen Canada sign over 20 economic and security agreements over 5 continents over the past year.
Pakistan is an important country in terms of our trade diversification strategy. Our two countries share a long history of cooperation. More than 300,000 Canadians of Pakistani origin help strengthen those connections every day, serving as a bridge between our two nations. And today's discussions focused on further advancing this partnership between our two countries. I will speak first about the geopolitical situation, of course, as that is the subject on which we have discussed numerous issues over the past number of months. And I'd like to acknowledge Pakistan's efforts in supporting dialogue aimed at achieving a sustainable and peaceful resolution to the regional tensions in the Middle East, including involving Iran. Canada remains concerned by the escalation of tensions across the Middle East and Gulf region. We are troubled by attacks on civilian infrastructure, including power and water desalination facilities, which place civilian populations at risk. And we encourage all parties to exercise restraint, prioritize the protection of civilians, and pursue dialogue. Canada is working with international partners to support the safe and secure movement of maritime traffic through the Strait, while encouraging de-escalation, dialogue, and diplomatic engagement in support of regional stability. Le Canada travaille avec ses partenaires internationaux pour appuyer la circulation sûre et sécuritaire du trafic maritime dans le détroit de Hormuz. Now I'd like to turn to the bilateral relationship. Of course, there are several areas where Canada and Pakistan have advanced shared priorities, and we have committed to do more work in this area. First, as my colleague has mentioned, we are committed to expanding trade and investment through a new Foreign Investment Promotion and Protection Agreement known as a FIPA, to be completed at the earliest possible date. This modern investment framework will help to provide businesses in both countries with greater predictability and confidence to invest and to grow. And Canada sees opportunities to expand agricultural trade. We look forward to seeing more Canadian products, including canola, chickpeas, and lentils, available here in Pakistan. And I'd like to thank Deputy Prime Minister Dar for the collaboration that has supported increased access for Canadian canola producers and stabilized supply chains. As a result, Pakistan imported more than 470,000 tons of Canadian canola during the last crop year. And I've spoken with industry groups, including the Canadian Canola Council. We appreciate this continued cooperation. At the same time, we welcome the presence of more Pakistani products on Canadian shelves, from rice and textiles to sporting goods, especially as cricket continues to gain popularity across Canada. In my own hometown of Oakville, the federal government has contributed to the first ever cricket pitch in Oakville. And when you come, Senator Dar, you will have to come and see this cricket pitch. Inshallah. In short, Canada is also interested in deepening cooperation in sectors that will contribute to future economic growth. As a global energy producer, Canada is exploring opportunities in renewable energy, and I am so pleased that the Canadian company JCM Power, in partnership with Karachi Electric, will soon begin development of the 240 megawatt Dabeji hybrid wind and solar project, bringing together Canadian expertise and Pakistan's clean energy goals.
We also see potential for collaboration in mining and critical minerals, including through Barrick's investment in the Reko Diq project, an initiative of importance to both our countries, and one that reflects the expertise that Canadian companies offer. Moving to issues of security, Canada recognizes that contributing to stability internationally can also support shared prosperity and security. Pakistan is an important partner for Canada in South Asia and beyond. We've seen this in the talks that Pakistan has hosted during various phases of the Iran war. And I'm pleased to announce today that Canada will invest more than $2.2 million in 3 new security initiatives with Pakistan through Interpol and the United Nations, among other organizations. In particular, working alongside Interpol, the United Nations Office on Drugs and Crime, and the Royal Canadian Mounted Police, these initiatives will support efforts related to border management, terrorism, financial crime, and providing training for law enforcement professionals. Perhaps more importantly, I can move to people ties before concluding. As I mentioned, Canada is home to more than 300,000 Canadians of Pakistani origin. Canada and Pakistan have worked together for many years on development initiatives that support communities, that support infrastructure, that ensure that education and health services, gender equality, women's economic empowerment, and disaster recovery are goals that are supported and shared and promoted. Today, I am pleased to announce 3 new development assistance initiatives valued at $45 million. These investments will support Pakistani communities in adapting to climate change, strengthening resilience, expanding access to education, particularly for girls, and improving reproductive health and family planning services. They'll also assist communities continuing to recover from persistent flooding that Pakistan has experienced in recent years. And we're pleased to work with partners, including the Aga Khan Foundation of Canada, the United Nations Development Program, and the UN Population Fund to deliver these initiatives. In short, from development cooperation to security collaboration to expanded trade and investment, Canada and Pakistan have meaningful opportunities to strengthen our relationship for the benefit of both of our peoples. Deputy Prime Minister Dar, thank you once again for your partnership and for the constructive discussions that we have had during this visit. Thank you all for joining us today. Merci beaucoup. Bohat shukriya. Thank you. नायब वज़ीर आज़म इशाक़ डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इशाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान आमद पर कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक खैर मक़दम करते हैं। कैनेडा में मुतहरक पाकिस्तान बरादरी ताल्लुक़ात का हम सुतून है। इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक की मुश्तरका तरजीह है। नए मुआहदों पर वज़ीर आज़म हाउस में दस्तखत किए जाएंगे, जबकि कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया कि पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तक़बाल पर नायब वज़ीर आज़म इशाक़ डार की मशकूर हूँ। 20 साल बाद किसी कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान यकीनन तारीख़ी अहमियत का हामिल है। मटियारी के वहाब शाह रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी हादसे के बायस ट्रेन ऑपरेशन ताहाल मुअत्तल है। अंजुम वहाब से इस बारे में मज़ीद जानते हैं। अंजुम, क्या बताया जा रहा है, कब तक बहाल कर दिया जाएगा? जी, सूरत हाल में तो फौरी तौर पे ऑपरेशन बहाल होना मुश्किल लगता है। अप डाउन ट्रैक के ऊपर बोगियां तो हटा दी गई हैं, लेकिन ट्रैक की मरम्मत का ताहाल काम जारी है। टीमें वहाँ पर लगी हुई हैं। इस सिलसिले में कराची से भी तकरीबन 3 ट्रेनें जो हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। हज़ारा एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस को मनसूख किया गया है, रहमान बाबा एक्सप्रेस को मनसूख किया गया है। इस तरह का देखा जाए तो लाहौर से भी मुतादिद तकरीबन 60 ट्रेनें लाहौर से भी मनसूख की गई हैं। इन ट्रेनों में मुख्तलिफ ट्रेनें शामिल हैं, जिसमें मारगरा से कराची के दरमियान चलने वाली ग्रीन लाइन की लाहौर से कोचिज नहीं लगाई जाएंगी। कराकरम एक्सप्रेस, बाग बिंदीज एक्सप्रेस,
कराची एक्सप्रेस, मिलत एक्सप्रेस को आज कैंसिल कर दिया गया। ये लौट से चलने वाली ट्रेनें थी जिनको मनसूख कर दिया गया है। इनके मुताबिक को टिकट का रिफंड दिया जा रहा है। ये कल शाम को ये वाकया हुआ था और अब तकरीबन 20 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं नहीं हो चुकी है। और ट्रैक की मरम्मत का जो जाएगा ये कहना है कि रात 8 बजे से पहले 8-9 बजे से पहले ये ट्रैक का बहाल होना नामुमकिन है। तो इस वजह से अब ट्रेनें तो यहाँ से कुछ तैयार की गई हैं, कराची से पाकिस्तान एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया है। ताहाल उसको भी कहीं सी स्टेशन पर रोक लिया जाएगा क्योंकि ट्रैक आगे मरम्मत नहीं हो सका है। तो ये सूरत हाल है कि ट्रेनों को तो कराची से रवाना करने का शेड्यूल जारी किया जा रहा है, लेकिन ट्रैक के कब बहाल हो गए सिलसिले में भी मुसाफिरों को कोई इत्तला नहीं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अंजुम। सर दर्द, पट्टों का दर्द, दांत का दर्द, Ponston Flash offers fast pain relief. Dispersible tablets available in mixed fruit flavor. Ponston Flash by LCI. रोजाना हमारे बाल कितना डैमेज सहते हैं, इससे बालों के गहरे बॉन्ड्स टूट जाते हैं। इंट्रोड्यूसिंग न्यू डव बॉन्ड रिपेयर शैम्पू। इसमें है प्रोटीन पेप्टाइड जो बालों के टूटे बॉन्ड्स को फिर से जोड़े और बनाए डैमेज फ्री और स्ट्रॉन्ग। New Dove Bond Repair. One-step formula. 10 minutes and your skin is ready to shine. Golden Pearl Lightning Urgent Facial. Coca-Cola पिला दे, ज़ालिमा Coca-Cola पिला दे। 100% grey coverage with no fear of hair damage. Permanent color with Italian formulation. So right side. Hello hair color. Colors to die for. Fresh Enjoy Onion and Rosemary Shampoo. वही राज, नया अंदाज। फ्रेग्रेंस जो रहे देर तक साथ। गोल्डन पर्ल परफ्यूम बॉडी स्प्रे, यही है खुशबू बिलाशुबा। हम सब बोलेंगे बूम 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 बूम, हम सब बोलेंगे बूम 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 बूम, हम सब बोलेंगे। Try Golden Pearl White Beauty Face Wash. 3 super ingredients, 1 single dose. ये है 24/7 radiance का super formula. Golden Pearl White Beauty Face Wash. Love your skin. Introducing Fresh Enjoy Onion and Rosemary Shampoo. प्याज के कुदरती सल्फर और रोजमेरी ऑयल से बाल बने 5 गुना मजबूत और 3 गुना लंबे। ये वो नुस्खा है जो हमेशा से चलता आया है। फ्रेश एंजॉय अनियन एंड रोजमेरी शैम्पू, वही राज, नया अंदाज। चारकोल जो डीप पोस्टेड डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स रिमूव करता है। गोल्डन पर्ल चारकोल फेस वॉश, डीप क्लीन क्लियर स्किन। से ये कह रहे मुलाकात नहीं हो रही है, हम बेबस हैं। ये हो ही नहीं सकता है, बेबस कोई नहीं है। ये तरीके लेते हैं और ये ट्रक की बत्ती है। खान से अगर मिलेंगे ये तो खान मुबैना तौर पे खान ने केपी हुकूमत के हवाले से और बहनों के हवाले से कोई फैसले किए और वो फैसले बाहर आ जाएंगे। तो लिहाजा जितनी देर ताखीर से मुलाकात हो उतना ही बेहतर है। आगे खान ने इनसे पूछना है ना, तो फैसले किस तरह के हैं? फैसले मिसाल के तौर पे शायद केपी की हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, कुछ वज़रा से मुतमईन नहीं है, अपने बहनों की बार बार मुदाखलत से मुतमईन नहीं है। उन्होंने तो अभी खुद कुछ अर्सा कबल कहा था कि ये कोई बयान जारी नहीं करेंगे, कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन अब तो अमरन बुशरा बीबी के अंदर जाने के बाद तो कोई रजिस्ट करने वाला ही नहीं है। पार्टी में तो किसी की जरूरत ही नहीं होती है कि मोहतरमा अलीमा खानम की सुजेरेनिटी को चैलेंज कर सके। आप देख रहे हैं ना, अब तो अमलन वो मैदान में आ गई हैं और जलसे कर रही हैं और कह रही थी कि अली मोहम्मद खान ने मौरूसियत पे बयान दिया है जिस पे अली मोहम्मद खान की तस्दीक अभी तक हो रही है। मौरूसियत और क्या चीज़ है? आपके अलावा पीटीआई में कोई नहीं है। अगर निकलना ही था खान के लिए, पीटीआई के लिए, तो 9 मई के बाद आप तो क्यों नहीं निकले? 8 फरवरी तक इंतजार क्यों? जब वजीर आला तब्दील करना हो तब तो बड़ी मुलाकात भी हो जाती थी, फैसले भी हो जाते थे और पता भी चल जाता था जी नेक्स्ट वजीर आला कौन होगा। व्हाट हैज चेंज? देखिए, मैं आपको ये अर्ज करूं कि मुलाकात कब खान से करनी है, किसने करनी है, कब बंद करनी है, ये सारे फैसले हुकूमत नहीं कर रही है, नई एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ये मोहतरमा अलीमा खानम कर रही है।
और वही होता है जो वो चाहती है। अच्छा। बड़े ही ओब्लाइजिंग ये लोग हैं। अभी देखो खान ने कहा, बुश बीबी ने कहा कि बैरिस्टर सैफ को मुलाकात दी जाए। मजाल है कि बैरिस्टर सैफ को, जिस पे खुद फतवे पीटीआई जारी करती हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर इतने अच्छे ताल्लुकात होते तो बैरिस्टर सैफ को रसाई मिल जाती।